Hi guys, Welcome back to our YouTube channel. my name is Isha And I am Sana. and we are the Dumb Droid. So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक कुरान की बहुत स्पेशल वीडियो पे. Yes guys, so this is a very interesting topic and the title is The Seas Not Mixing with Each Other. तो ऐसे दो seas हैं जो कि कभी आपस में मिलते नहीं है, like they meet but they don't mix with each other. हाँ, I guess ऐसा कुछ है. मतलब हम लोगों को पहले हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, बट जो इसमें टाइटल में आ गया वो है कुरान एंड मॉडर्न साइंस. सो दे आर गोना प्रूव इट थ्रू कुरान कि कुरान में कैसे साइंस के थ्रू इस चीज को प्रूव करा गया है. सो गाइस वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो बिकॉज इट्स सो एक तो इन्फॉर्मेशनल और मतलब कैसे लिंक्ड है ना. तो मतलब ऐसा टाइटल इसमें दे दिया इतना कैची. आई गेस आप लोग भी सरप्राइज्ड हो गए होंगे कि क्या होने वाला है वीडियो में. तो पूरी वीडियो देखना हमारे साथ, तभी पता चलेगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा बाद में. हाँ गाइस, तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो. यस, Scientific miracles of Quran. ओके, मेरे को बड़ी अच्छी लगती है ये वीडियोस होती है ना जो साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ प्रूव करी जाती है. इस्लामिक. ओके. He has let free the two bodies of flowing water, meeting together. Between them is a barrier which they do not transgress. The expression of the verse has a mind-blowing style. For the verse informs us that the seas do not mingle with one another despite all storms and huge waves. Yes, science confirms the verses of the Quran as it always has been and proves that it is the word of Allah. It is as follows. The French marine scientist, Captain Jacques Cousteau, who is famous for underwater research, explains the results of his investigations about water barriers as follows. Okay. We were investigating of some researchers' judgments that put forth that there were some barriers that separated different masses of the seas from each other. Oh. As a result of various studies, we saw that the Mediterranean Sea has a peculiar natural level of salinity and density. At the same time, it has specific life forms. Then we analyzed the mass of water in the Atlantic Ocean and saw that it was completely different than the Mediterranean Sea. Oh. However, these two seas, which merge at the Strait of Gibraltar, were supposed to be equal or at least near to equal in terms of salinity, density, and life forms that they had. However, these two seas have different structures even in places where they converge closely. Upon our investigations, we came across an event that amazed us. There was a great water curtain at the merging point that did not allow these two seas to mix. The same kind of water barrier was found by German scientists at Bab al-Mandab, where waters of Gulf of Aden and Red Sea converged in 1962. In our later investigations, we witnessed the existence of the same kind of barrier in all merging points of seas that have different characteristics. This amazing fact, which amazed Captain Cousteau about the waters that do not mix up though seas converge, is explained with the following verse in the Quran 14 centuries ago. He has let free the two bodies of flowing water, meeting together. Between them is a barrier which they do not transgress. Another kind of water barrier on Earth is seen at bays and deltas, where the freshwater rivers flow into the seas. Rivers that have the utmost possibility of mixing into one another because of their surface and bottom currents never mix with salty water in places where they fall into seas. If Allah did not put the law of not mixing up between these two waters, the freshwater rivers on Earth would mix up with the salty seawater, and the living creatures within them and their environments would be annihilated altogether.
The Quran attracts attention to the miracle of this not mixing of these fresh and salty waters in another verse as follows. It is He who has let free the two bodies of flowing water, one palatable and sweet, and the other salt and bitter. भाई Yet has He made a barrier between them, a partition that is forbidden to be passed. कुछ हो रहा है ना? हाँ सही में. Yes, the fact that the seas do not mix with each other and the freshwater rivers do not mix with salty waters shows the infinite power of Allah. Indeed. Its being expressed 1400 years ago in the Quran proves that the Quran is the word of Allah. Yes, that is true, of course. For it is impossible to base this information on a man's personal discovery who lived at that age. Exactly. It is also impossible to base it on Sahi all mein. people's discovery who lived at that age. Obviously. It is impossible for a man to discover and write a truth that science has discovered only in this age on his own पहले से लिखा 14 हुआ है, centuries हाँ, ago. कितने time बाद, 14 centuries ago. Therefore, the Quran cannot be the word of man. It is the pre-eternal word of Allah, who is the creator of lands and skies. So guys, Wow. वाओ इतने ज्यादा मतलब मैं तो बहुत ही शॉक्ड हो गई थी जब धीरे धीरे उन्होंने 2 वर्स पढ़े ना आई गेस, एक फर्स्ट और एक सेकंड. और एक दूसरा, और उन्होंने मतलब पूरा पहले बताया कि मतलब साइंटिस्ट, किसी एक फ्रेंच साइंटिस्ट का नाम ले रहे थे, ही लेटर डिस्कवर्ड है ना, कि हाँ उसमें सेलेनिटी ज्यादा है, वो ज्यादा है, बट वो इसलिए वो मिक्स नहीं करता. एंड दैट थिंग इज ऑलरेडी रिटन इन द कुरान लाइक सो मेनी इयर्स अगो. यस, और मतलब 14 सेंचुरी पहले लिखा गया था. हाँ वो. तो गाइज मतलब कितने टाइम पहले, और उसमें इन्होंने बताया भी कि इतने टाइम पहले कोई भी डिस्कवर नहीं कर सकता, ऐसा कोई हाँ, टूल नहीं था, और ऑब्वियसली वही. इतने बड़े बड़े शिप्स नहीं थे यार. और सोच अगर so- तूने बोल भी दे कि चल किसी इंसान ने लिख लिया, तो भाई हाँ. इतना सच तो कोई कैसे लिख सकता है, मतलब कोई कैसे जान भी सकता है, you know? एग्जैक्टली. और गाइज मतलब ये तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और आई गेस सच हम्म. लिखा होता है होली बुक्स में, जो लिखा होता है हाँ. मतलब बिलीव जो होते हैं आई गेस लोगों के अकॉर्डिंग टू मी ट्रू होते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो साइंटिफिक रीजन से, जैसे कुरान में भी प्रूव हुई है यार. ये तो सच ही. थिंग पता है इन वीडियोस की, जो मतलब साइंटिफिक चीजों को प्रूव करते हैं ना, Exactly. तो कुरान दिस इज माय फेवरेट पार्ट, यू नो. सो गाइज, दिस वाज वेरी नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जिससे हमें काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ पता लगा. हाँ. एंड यू नो ऐसा मतलब ऐसा फील होता है कि यू नो अबाउट अलमाइटी, मतलब मिरेकल्स इतने सारे हाँ है ना? क्या क्या है. और हम्म. पता है क्या, ये वाली वीडियोस बहुत अच्छी लगती है कुरान की, जो ऐसी ऐसी बातें होती हैं और साइंटिफिक रीजन मतलब फैक्ट्स के साथ प्रूव करी जाती है ना, इंटरेस्ट आता है यार ऐसी वीडियोस हाँ. देखने में बहुत ज्यादा. और ना अभी ना एक वीडियो थी, हम देख रहे थे, उसमें ऐसा था वीडियो में कुछ कि कौन सी? एक वीडियो थी, उसमें ये था कि 10 एंजल्स या फिर 10 ऐसे चीजों का मेंशन हुआ है कुरान में जो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. कुछ ऐसी चीजें थी, हम बड़े एक्साइटेड थे जो हम देख रहे थे कि उसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे. हाँ गाइस, तो मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें वीडियोस हैं, हैं, हाँ. मतलब ऐसी अननेचुरल चीजें भी हैं इनफैक्ट, हाँ. यू नो, कि जिसमें कुरान में मेंशन हो रखा है, जिनके जैसे जिन वगैरह तो काफी लोग नहीं हाँ, मानते, but exactly. कुरान में मेंशन हो रखा है उनका, तो हम्म. ऑब्वियसली दे आर रियल. हाँ. सो गाइज हम ना यही मैं बोल रही थी कि आप लोग बताओ कमेंट्स में, आप चाहते हो ऐसी चीजों पे भी हम रिएक्ट करें, मतलब या फिर मतलब बताओ. सुपर नेचुरल, हाँ, वही, जो लोग वही, मानते हैं supernatural. सुपर नेचुरल है. तो अगर आप चाहते हो, सो यू कैन गाइस सेंड अस रिकमेंडेशंस. दिस वाज आल्सो सेंड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग अस सच एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सही में, और भेजते रहो, रुकना मत. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. यस, बाय.